गोटे क्वेश्चन सब समस्त को तो यहाँ आम डेफिनेटली पचरा कि वाई सिविल सर्विस तो यहाँ तो गोटे माने समस्त कॉमन क्वेश्चन आउ जिते जन जाती इंटरव्यू को पचारती कि कहीं सिविल सर्विस जॉइन करा चाहते कि व्हाट अट्रैक्ट यू टू दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और सिविल सर्विस तो तापाई आम एनी माने स्टैंडर्ड आंसर तो एमती किसी ना कि तुम डेफिनेटली भाविकी रख कि कौन एक्चुअली आम सिविल सर्विस जो क्वेश्चन आदि पचरा जे तुम आंसर कौन रमती नहीं गोटे डेफिनेशन भाया कहबानी मो मत किसी रियल एग्जाम्पल जदि तुम दे पार जे हाँ यही कज जो माने किसी कनेक्टेड है भाया गोटे आमर आंसर निहाती रहा दरकार तो मो मत आम लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फास्ट क्वेश्चन कि वाई सिविल सर्विस तो आप ये क्वेश्चन तो जिते जन जी डेफिनेटली पचरा तो आप कौन गोटे आमर मे बी आम समस्त जो पॉइंट्स रु किसी आइडिया नहीं पार आम ये क्वेश्चन जब पचरा ताले कौन आमर रही आंसर तो बहुत गुड़े पॉइंट रू आम किसी पॉइंट्स नहीं पार तो कौन हम माने कहार कौन व्यू अच्छी जे ये क्वेश्चन जो पचरा जे वाई यू डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस तो कौन आर आम यार रिप्लाई कौन दबा एनीवन एनीथिंग तुम कहि परिबो हाँ जयश्री कह Sir, this service provides diversified opportunity, and I think that I'm suitable for this to tackle it provides diversified challenges, and it provides us opportunity to solve problem and help the society. ओके जे सपोज सही कथा पचारे कि काउंटर सपोज जड़े क्वेश्चन जे तुम डाइवर्सिफाई बोली किसी एमती एग्जांपल दे पारिबो कि तुम जे मु एई जो हाँ एमती किसी आगु करिच जोटा कि डाइवर्सिफाई रोल तुम एमती किसी आगु अचीवमेंट अच्छी कि करिच तो सेमती किसी एग्जांपल दे पारिबो कि हाँ yes sir. Sir, when I was in my fifth year of post graduation, doing my thesis, that time actually my background is I had a research background. I come from Indian Institute of Science Education Research, Kolkata. So I had been exposed to many research and highly technological equipment and higher studies. So the place where I was staying, I have seen many children who were very poor and they were not having basic education facilities and basic things which I was having. So I was giving some students, some children, some education without taking any cost. And with my fellow students, I started a program to give them education. And with that help, I also talked with my director and asked them to help those children because I thought that this is my moral responsibility to give them what I am getting this knowledge. I should transfer them also. So, by the help of our director and many research faculties, we created a program, and through which many students from outside they came and joined that program, and they were exposed to the research, what kind of research was going on. So that changed me, and I came to this service. Okay, I started so preparing. counter to this, suppose someone asks then why don't you join NGO? NGO are also doing the same question. Sir, this job gave me different perspectives and different dimension actually. In NGO, it will work only for some kind of particular problem like education or some disabled person or we can say old age problems. But this gave me opportunity to look to every dimension of the society. Okay. So therefore, it will. Therefore, I choose. तो ये क्वेश्चन टा जिते जन आम इंटरव्यू को जीव डेफिनेटली क्वेश्चन पचरा जाऊँचे समस्त को आईटा हूँ फास्ट क्वेश्चन डेफिनेटली पचरा जीव तो आपाई तुम गोटे रेडीमेड आंसर रहा दरकार एंड यू थिंक अबाउट इट एंड यहाँ एत इजी क्वेश्चन नुहे जो क्वेश्चन टा यहाँ हूँ कहवाक गले जे यही क्वेश्चन टा ही तुमको डिसाइड कर तुम पर्सनालीटा जजमेंट यू ही तुमको माने से माने जज करें तुम थिंकिंग्स को भाया तुम
तमर टोटल माने इंटरव्यूटा डिपेंड कर गोटे सिंगल क्वेश्चन स्टार्ट हम ओके व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस और व्हाट अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और सिविल सर्विस ओके तो यहाँ डेफिनेटली गोटे भाविक आउ यहाँ गोटे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन रहा दरकार डिफरेंट व्यू रहा दरकार से मुझे गोटे क्वेश्चन रखुच्छी जोटा कि मु डिफरेंट व्यू पॉइंट देखा तो ताठू तुम रिलेट करके कहीपर केमी कहले भल हो पार कारण यहाँ गोटे सिंगल क्वेश्चन जोटा कि फास्ट जो 1 और 2 मिनट से डिसाइड कर तुम पर्सनालीटी कौ भाई ओके संजीव कह गुड इवनिंग सर मेसेज बॉक्स रे भी तमे मेसेज करि परिबो जहार जहां पॉइंट्स रहउची तो मेसेज बॉक्स रे तमे मेसेज भी करि परिबो ओके यस हां संजीव को हमें स्टार्ट करिवा टॉपिक किंतु ए गोटे क्वेश्चन 5-10 मिनिट्स डिस्कशन करिवा तापर करिवा ओके यस sir during my last year of graduation I'm from agriculture background so I have worked with along with assistant agriculture officer and BDO in rural area for 3 months in a RAWE program, that is rural agriculture work experience. And at that time I have seen and interacted with the BDO and the diversity of career and the field that he can bring the change is much more than in any other agriculture field or officer. So okay I think it will be more diversified to diversified career area than any other agriculture background. okay That any other that's why I think okay bhavato childhood inspiration okay Abhinash it is also help us to involve in policy framing and implementation or execution okay any other mane au kahar kiछि points rahiba apai sir kone lade sir it would answer very okay sir Odisha is a state where there is a regional disparity which creates general challenges like coastal area there is a challenge like floods cyclones and but inter area challenges like unemployment migration problem drought problem poverty so in civil service I can deal with every challenges which give me a dynamic situation and dynamic job profile and also it will help me to part of this transformation society so I can get a chance to work with various places various posts throughout the state and throughout my career which is helpful me to gain experience throughout my life and according to Plato without examination a life is not a fruitful life so that's why civil service attract me to okay join okay au kahar kiछि point अछि एक क्वेश्चन आमर चलो एमती मझे मझे पचरा जो पर्यटन आम गोटे साटिस्फैक्टरली तुम निहाती रेडी हम ओके लिजा ओके इन सिविल सर्विस वर्ड इटसेल्फ टू एक्सप्लेन टू सर्व द सोसाइटी ओके Tanuja is special platform where I can change the life of numerous downtrodden and unprivileged group okay ये क्वेश्चन जन को पचारि मु कहली कौन पे तुम जॉइन करिया चाहछ से कहले कि आई डोंट वांट टू बी हाउस वाइफ तो मु कहली कौन पे ना हाउस वाइफ रही गली किसी आइडेंटिटी मोर नाही तापरे भी इन फैमिली और तमर गाँव रे माने कहउछन हाउस वाइफ माने they don't have recognition and also they in the society they don't have a respect in the society and always they are dependent on others so sethipai mu I don't want to be as a become remain as a housewife independent haba ku chahunchi and recognition mane ku chahunchi and to motivate other तो जो माने कि believe करनांती कि जो माने housewife अछंती those who are housewife they cannot come out of the like the four walls and do something for the society so I want to become an example for others and give inspiration and motivation to the people or the particularly the housewife who always means who always feel that they are actually not giving the proper recognition in the family or in the village or in the society तो सी भले गोटे मते आंसर एक्चुअली कहले कि जे सिंपल जिनस
तेणु तुम एमती किसी कह कि हाँ एग्जांपल कि तुम जब रियल लाइफ रे तुमको कहे हाँ कहीं तुम एमती भावुच जे हाउसवाइफ हेले रिकग्नाइजेशन मिलूनी बोली तो डेफिनेटली तुम किसी एग्जांपल कहीपर कि हाँ एमती गाँव में लोक मैंने बिलीव कले पाठ पढ़ी रहीगला किसी करूनी कि करें लाइफ रे तो सहीटा को मुझे ओवरकम करने यहाँ मुझे करुँच तो मैंने मो मत मोर आमर डेफिनेशन ओरिएंटेड आईटा तो डेफिनेटली कह किंतु ताकू गोटे रियल एग्जांपल तुम जब कह कि कहीपर कि हाँ मुझे गोटे एरिया को बिलंग करोठिक आम रोड कनेक्टिविटी ना कि इलेक्ट्रिसिटी ना कि एजुकेशन प्रॉपर आमर से एरिया को जाए तो जो प्रोब्लेमटा आम छुआ दिन फेस करके आसी सिमिलर थिंग्स एक्चुअली lot of area achi if I can change a smaller I can change a small thing in that area also तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड और बेटर अपॉर्चुनिटी से मानक पई क्रिएट करि परिबे तो एमिति किछि माने तमरो पर्टिकुलरली रियल लाइफ रे किछि हेइछि आउ ताकू तमे कनेक्ट करिवो ए डेफिनेशन संगे तो सेटा मच मोर इंपैक्टेड हबो मच मोर फ्रूटफुल हबो गोटे आंसर हवा पई तेणु से लाइन में भाव ओके तो यहाँ गोटे इजी क्वेश्चन नुहे कह जाए यहाँ हूँ जे माने गोटे क्वेश्चन जोटा कि तुमको डिसाइड करिवो तमर पर्सनालिटी तो ताको टिके भाबी चिंती किछि तमरो एमिति बहुत काम करूछ जे रियल लाइफ रे तुम बहुत किछि करिछ ऑलरेडी ओके तो सेटा को भाबिया पड़िबो एटा को तुम भाबी कि क्वेश्चन टा मु सेति पे तुमको देली कि तुम पर केबे भाबी कि हमें डिस्कशन पर करबा ओके तो ठीक अछि सर गुड हां को सर मु जो एरिया रे सर रहूची आपण तो जानिछन सर सेटार सर एग्जांपल दे परिबे कि जॉब एरिया रे सर दे परिबो सर एमिति को रही परिबे कि सर जो कोविड 19 टाइम रे निखिल पोकलैंड जे थिले हमर एक्स कलेक्टर सुंदरगढ़ को तांको जॉब प्रोफाइल जेंति डायनामिक थिला से माने 24 आवर रो अराउंड 16 17 आवर पंत माने बहुत किछि रे काम करथिले सेटा गोटे एग्जांपल सेट कर परिबे कि सर हाँ करिपर जे हाँ मु देखिकी इन्स्पायर हेली माने सोसाइटी जड़े काम करुच्ची तो सहीटा इंस्पिरेशन मत देला तो माने ये जॉबटा एते डायनामिक आते तो एग्जांपल देकी करिपर गोटे डायरेक्टली डेफिनेशन कहवा अपेक्षा मोर तुम कि गोटे एग्जांपल ओरिएंटेड करके गोटे रियल लाइफ एग्जांपल आईटा देले बेटर कनेक्टेड हो पार सेटा को टिके देखिकी भाविकी कर ओके ठीक अच्छे आ कौन रहा अनित हाँ अनित कह Sir, I would like to say that, sir, I always contact with our BBSR and I'm working as a Gram Panchayat extension of officer. On this part, I have seen that our video always touch with the grassroots for the upliftment of the downtrodden people and their basic amenities like the rural housing, then road connectivity, pensions, old age pensions, and another rural sanitation like this, sir. In this ground, all the Panchayat development works are being supervision and monitored by the video. I usually see from him, so I have strong desire to dedicate myself for this post like the Odisha civil service examination, and I'd like to join in the Odisha civil service. I would like to say like this, sir. Okay, if you okay. type of question is asked to me. Okay, good. So let's start with the topic. तो first topic हमें रशिया यूक्रेन रो जो कॉन्फ्लिक्ट आ वार तो डेफिनेटली एटा गोटे टॉपिक जोटा कि थ्रू आउट वर्ल्ड को इम्पैक्ट करिछि थ्रू आउट हमर वर्ल्ड रो इकोनॉमी को सप्लाई चेन ग्लोबल सप्लाई चेन को अफेक्ट करिछि वेदर इट मे बी हमर रिलेटेड टू जो सनफ्लावर ऑयल हो कि हमर व्हीट हो तो टोटल इवन इफ हमर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सब हमर टोटल एटा को अफेक्ट करिछि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी बहुत चेंजेस हेछि याकू नै कि डिफरेंट ग्रुपिंग भी फॉर्म हेछि तो एटा गोटे टॉपिक डेफिनेटली तुम एक्सपेक्ट करि परिबो इंटरव्यू ऊपर तो लेट्स डिस्कस फास्ट हमर रशिया आउ यूक्रेन रो जो कॉन्फ्लिक्ट कोन पई कॉन्फ्लिक्ट हैला आउ को डायरेक्शन रे डेफिनेटली पचारिबो जे एथि तो एटलीस्ट कॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट हमें निहाती डिस्कशन करिया दरकार ओके सो ता पई जार पॉइंट अछि यू कैन रेज एंड मेक सम पॉइंट तापर हमें डिस्कशन करिबा यस
Guru, any points for this? Sir, Guru. Russia Ukraine conflict main cause कौन? Or anyone want to make some points? Expansion of NATO, okay. Jayashree को Tanuja को तापरे Jayashree. Sir, Ukraine's bid for NATO membership and Russia's interest in the Black Sea, accompanied by the protests in the Ukraine, is the major cause of the conflict of Russia and Ukraine. Okay. Okay, Jayashree. Yes, so the same point, but wanted to add one, two more points. Like the main reason is the geographical and security issue. And the same what Tanuja has said, that the expansion of NATO and therefore Russia has demanded three things to Ukraine, that it should first recognize Crimea as the part of Russian territory. Second, that it should declared the two regions of southeastern region as independent, and third, it should not ally with NATO and other European Union. So these are the things what Russia demanded Ukraine, and therefore the recent development has been seen in Ukraine. Okay. Okay. Yes. Alok. Yes, good evening, sir. So, the background of Russia and Ukraine war, it was a chessboard of two global powers who want to show their hegemony over the country. So, the basic reasons before the Russia-Ukraine crisis, the first is the de-NATOization of Russia. Then over Ukraine, then the de-Waffaization, that is the Ukraine still it is not included in the NATO. It is the offer between the NATO and the Russia. Next one is this is maybe we can divide into number of consequential effects like the historical causes, then economical causes, geographical causes, political causes, military causes, and many more. A number of causes are there. So when you are taking the historical causes, in while the Russian disintegration done in 1991, at that time Russia taken the legacy of USSR, but apart from that, the second highest land area that belongs to Ukraine. So there is a race of influence. Then another is that geographical condition. As previously somebody told about the geography, so I am not going to that. Then another thing is that Western influence. Western influence means that the current geopolitical and the political situation inside Ukraine itself, it is that President Zelensky tries to put more towards the Western section. So here there is a issue. There is an issue of that influential activity. Another thing is that the failed peace process between Russia and Ukraine. Another thing we can, if we go little back, that is the Ukraine issue. Then the Crimean issue. Then if another thing is that is the ultra nationalist force that is developed by Ukraine. That is that one that gives those military groups, that is they are called as the neo-Nazis. So Russia tried to be neo-Nazism of that particular group. Then some activities, political activities of Ukraine, like ban on pro-Russian
parties in Ukraine itself. Then the failure. Another big thing that the failure of means peace process and Russia and the Ukrainian president's constitutional amendment on included in the NATO that gives a impact, that gives an initial from the Russia to invade or to attack on the Ukraine. Okay. Normally, Russia is a country which normally do not interfere any other country's internal matter, but in this concern, when it sees its own security is in threat because of the nationalization, it want to give the lesson to Ukraine. Okay. So Okay. that's ठीक अच्छे आलोक ओके तो एनी अदर पॉइंट माने मते बुलेट पॉइंट दरकार यही 3-4टा पॉइंट जो कारण तुमको जिते पचरा तुम पाखे एत पूरा एक्सप्लेन करिया भी टाइम नथियो 15 मिनिट इंटरव्यू तुम 3-4टा पॉइंट मते बुलेट पॉइंट कहबो आउ एथि जोगु ही हमर एई कॉन्फ्लिक्ट होची टू द पॉइंट आउ 3-4टा बुलेट पॉइंट दरकार ओके तो सेमिति तमे कहो माने पूरा टोटल एक्सप्लेन न करी कि पूरा बुलेट पॉइंट रे कहबो ओके संतोष को प्रथमे तापरे गुरु ओके संतोष को Sir, actually, I'll just briefly tell these all points. First of all, I'll tell this shared history. The Russian and Ukraine, they are having shared history of linguistic, cultural, and familial lines. And secondly, the emotional exploitation of the people. Like Russian part of Ukraine, they are having shared heritage of the country in Donbass and Luhansk, the Donbass region. Next is the balance of power. If you see, the Ukraine is a buffer state. And in order to keep the balance of power, both the US and the Western and the Russia, they have wired together. They wired against each other for greater influence in this country of Ukraine. Means a balance of power that is there. And one more thing, the civil war occurred in 2013. Which is very famously known as the Euromaidan movement. Euromaidan movement, the pro-Russian president Viktor Yanukovych, when decided to join the Russian-led Eurasian Economic Union, that was which created conflict, which created a civil war in Kyiv, particularly that was there, and which further led to the annexation of this Crimea. And lastly, we see after the Crimean annexation, the whole Western and the Western and the NATO power, they started coming closer to the Russian borders, and then the Ukraine's NATO inclination is there. And lastly, I'll see the Russia's interest in rich mineral resources region of Donbass region. Okay, yeah, Guru, bullet point कहबो आउ के कोन कहबो bullet point okay पूरा short रे कहबो Sir, already lots of the points are discussed. I think I can add only one, that is balance of power and the advantages of strategic point and the geographical point of view for the Russia. That is most prominent one is left. That is Belarus and now the crisis for this, that is Ukraine. And after leaving these two, maybe Russia face many strategic problem due to the NATO's expansion. Already, Great Soviet Russia already separated since 1993, and now also Latvia, Lithuania, and the Baltic Sea regions, all the countries are also joined NATO. That's why this problem was rises. Okay. That is the buffer state problem. Okay. ठीक अच्छे आओ के किसी कहबो or should you start? Sir, Nord Stream pipeline one that passes through Ukraine, and oil and natural gas are major part of Russia's export. So to protect its economic interest, and there is also important trade route from Russia towards the European Union through Ukraine to protect its economic interest. Thank you. Okay, Devasmita, any other point? Or Swasad? Okay, sir. Sir, basically there is three regions
to this war. In first one is in 1991, after Soviet Union collapsed, Ukraine become independent. So Ukraine wants to end cultural ties built with Russia. Then the second point is Ukraine wants to protect the autonomous existence of it. Then the third one is the third reason is uh, the growing influence of NATO in Ukraine region due to the Ukraine is a major conflict of this Russia-Ukraine war. Ukraine's want for this membership in the NATO is the main and chief reason in the Ukraine-Russia war. ओके सो ठीक अच्छी तो मेनी पॉइंट्स एक्चुअली समस्ते कहले कि मेन हाँ Sir. प्रसाद को Sir, Russia wanted to control over Black Sea to access the warm sea ports. That may be one point. ओके Sir, हाँ ଆଉ କିଛି point ଅଛି? हाँ शॉर्ट रे Sir. हाँ को ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଛାଡିଗଲେ ଲିଥିୟମ ମାଇନିଂ ଅଲରେଡି ଅଛି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ୟୁକ୍ରେନରେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଗ୍ୟାସ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେଥିପାଇଁ କି ୟୁକ୍ରେନ ଡୋନବାସ ଏରିଆ ହଉ ଓଡେସା ହଉ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଲିଥିୟମ ମାନେ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିଲେ ରଷିଆ ପାଇଁ କି ଇକୋନୋମିକାଲ ବେନିଫିଟ ହବ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ ହଉଛି ବ୍ରେଡ ବାସ୍କେଟ ଅଫ ୟୁରୋପ ଆଉ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟର ହ୍ୱିଟ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରେ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନର ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ରଷିଆ କ୍ୟାପଚର କରିନିଏ ତାହେଲେ ଫୁଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ସେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆଉ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ସି କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଚାହୁଁଛି ତ ବ୍ଲାକ୍ ସି କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଇକୋନୋମିକ ଆଉ ତାକୁ ଆର୍ଟିକ ରୁଟ ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଲ ଅଛି କି ଯେ ମାନେ 2030-50 ସୁଦ୍ଧା ରିଡକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଏମିସନ ଯଦି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ସି ରେ ଆକ୍ସେସ ପାଇଯାଉଛି ତ ସେ ଆର୍ଟିକ ଓସନ ଡେଭଲପ ରୁଟ ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବ ଏଇ ତିନିଟା କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆଟାକ କରୁଛି ओके तो फास्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट मु कहबी जे जो एक्सपांशन ऑफ नेटो तो सेटा हज मेन रीजन तुम जदि हिस्ट्री को जीव ओके जेतेले वर्ल्ड वार आफ्टर वर्ल्ड वार 2 द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू वन लेड बाय द वेस्ट लाइक यूएसए एंड द ईस्टर्न पार्ट जोटा कि लेड बाय यूएसएसआर बट ड्यू टू हमारा ये जो ड्यू टू कोल्ड वार एंड इन 1991 जेतेबेले हमारा कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर है कि लॉट ऑफ 15 कंट्री भितर सब मेजर एक्चुअली जदि आम देखा टॉप मोस्ट कंट्री आमर रशिया थिला आफ्टर दैट यूक्रेन ओके सो दैट टाइम व्हाट हैपन ना जर्मनी व्हिच इज आम कहचे जे जर्मनी को जो कंडीशन करागला जे जो नाटो ग्रुप चाहिए कि जर्मनी शुड बी माने जॉइन विथ कहा संगे ना नाटो आउ से समय एमाने कौन कले ना नाटो जो आमर रशिया जो यूएसएसआर संगे गोटे आमर कंट्राक्ट होता जो थी कि कहगला जब जर्मनी नाटो रे आमर माने आड होची आमे फर्दर आउ नाटो को कौन करूनी ना एक्सपेंशन करूनी तो आने कहले हाँ ठीक अच्छी तो जब जर्मनी तुम नाटो रे मिसी जाऊँगी तो वार्षा को आम कौन करूँ ना डिजल्व करदेबू ओके आउ एमाने कौन करेंगे आउ एक्सपेंशन करेंगे और फ्यूचर रे नाटो भी डिजल्व हम किंतु जितेबाला एमाने से एग्रीमेंट कले ओके रशिया से एग्रीमेंट कला यूएसएसआर से एग्रीमेंट कला आम नाटो संगे आउ जर्मन आड है आम नाटो ग्रुप संगे किंतु से माने तांकर जो एग्रीमेंट अनुसार से बैकस्ट्रैप कले से माने तांको प्रॉमिस रखिलेनी पर भी जर्मन आड हैला पर नाटो को से एक्सपेंशन कले एंड एमाने कौन वार्सा पैक जो करथिले जे दीटा एक तो मिलिटरी एलियंस थिला ना तो हमर नाटो भी गोटे मिलिटरी एलियंस जोटा कि कलेक्टिव सिक्यूरिटी रे चलुची कि वन ऑफ द जदी हमर स्टेट उपर अटैक हो होल ग्रुप उपर अटैक होला बोली आमे जणाजबो सिमिलरली हमर ईस्टर्न ब्लॉकटा जोटा कि रशिया हमर लीड करूथला तो दैट ऑल्सो कलेक्टिव सिक्यूरिटी तो एमानकर जो एग्रीमेंट अनुसार जो जर्मन आड है दे शुड एक्चुअली कौन करिया कथा ना नाटो एक्सपेंशन न माने करिया कथा नथिला से एग्रीमेंट होता किंतु जेतेले हमर 1991 जेतेले हमर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गला तो टोटल यूएसएसआर रो मेनी कंट्रीज जॉइन द नाटो ग्रुप सो नाटो रो एक्सपेंशन करागला एंड नाउ
दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू रीच आमर कौन ना जो यूक्रेन को भी ट्राए करुँच रीच करने तो इट इज ए सिक्यूरिटी एंड स्ट्रैटेजिक थ्रेट टू द आमर क्या ना रशिया को बोली कहुए ओके एंड रशिया ऑलवेज ट्राए टू माने ट्राए टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्यूरिटी आउ डेफिनेटली तार कौन ना स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू सिक्यूरिटी आउ ये सब मेंटेन करने ये तो चाहिए ये मेन कज हूँ एक्सपांशन ऑफ द नाटो फास्ट कज सेकेंड जेहेतु आमर हूँ जदि टोटाल ईस्टर्न बेल्ट रे यूएस रो किंबा आमर वेस्टर्न रो दबदबा रहिबो तो इट विल बी आमर कौन हो ना प्रॉब्लम फॉर रशिया तो ସେଇଟା ଗୋଟେ कज अपार्ट फ्रॉम तुम जमी कहले कि मिनरल आउ ऑयल रिसोर्स भी आमर रिच अच्छी जो ये आमर ब्लैक सी एरिया आमर क्रिमियन एरिया रे रही तो ସେଇଟା भी आमर हूँ कौन ना चाहिए ये केबे भी चाहिए एंड तुमर टोटाल आम कहते आउ क्रिमियर जो आमर अनेक्सेसन करागला तो से देख जो आमर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट है से जी आमर प्राइम मिनिस्टर थिले ओके यूएसएसआर सी कहले कि ये क्रिमियनटा आम देइथिलु काहाकू ना यूक्रेन को देइथिलु किंतु सब एंड दे मेक ए स्टेटमेंट ही मेक ए स्टेटमेंट दैट क्रिमियन एंड जो रशिया दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू इच अदर लाइक आम दी भाई भाया लाइक टू ब्रदर्स सो सेम कल्चरल टाइज तुम जो देख सेम लैंग्वेज अच्छी कल्चर अच्छी तो डेफिनेटली आमर कौन होची ना तांको भितर कोऑर्डिनेशन आउ गोटे बेटर रिलेशन रहिबा पाई एटा हमर कोन कर हैतला ना क्रिमियन को दिया जायतला किंतु रशिया सबले चाहुतला जे जे आज ए पपेट हिसाब रे आज माने से भाबुतला कि इट इज ए पार्ट ऑफ रशिया बोली तो ये केबे हमर अलगा हबनी तो ये जतबेले हमर कोन ना इंडिपेंडेंट पाई एंड टू मेंटेनेंस हमर ऑटोनोमस आउ इंडिपेंडेंस मेंटेन करिया पई जतबेले नाटो को अप्रोच करूची कि ये भी नाटो संगे मिसिया को तो डेफिनेटली इट इज सीम्स लाइक कि टोटाल आमर तांको एरियाटा आमर कौन होची ना मिलिटराइजेशन होबाक चाहूँगी कि नाटोजाइजेशन होबाक चाहूँगी तो से वन ऑफ द कज आम जोटा कि आमर ना रशिया निजर सिक्यूरिटी को माने एटा गोटे डिफेन्स करने आमर यही वार आमर स्टार्ट है किंतु केते दूर एटा ठीक जे तमर सिक्यूरिटी को डिफेन्स क्रिएट करने जो वार सिचुएशन आमर है वार भी होची दैट मे नॉट बी आमर माने करेक्ट बट तमर जो कज गुड़ाक तो माने कोठी ना कोठी नाटोर जो जो प्रमिज गुड़ाक आगु होता तो सबू प्रमिज हूँ गोटे कज जोटा कि वार हबार ओके तुम्हें देखिपर राज्यसभा टीवी भी यहाँ आमर अच्छी ओके सो लेट सी द डॉक्यूमेंट रे कौन कौन आमर अच्छी तो तापर किसी पॉइंट्स देखा तापर नेक्स्ट टॉपिक करिबा ओके ओके इवन इफ आमर जदि जी माने डॉक्यूमेंट आमर विजन भी आमर जो मेन 365 रे जो जोड़ा इंपोर्टेंट न्यूज रे अच्छी से भी बाछिक तमे टॉपिक करि परिबो ओके तो मे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जे आमर यूक्रेन जो हो कि आमर ऑटोनोमस रीजन थिला आमर अराउंड 1917 टू 20 भितर तो इट इज पार्ट ऑफ हम सोवियत यूनियन थिला किंतु जेतले 1991 सोवियत यूनियन कोलैप्स हैला तो एटा इंडिपेंडेंट हैला तो आफ्टर दैट तो सो मेनी जो 15टा एक कंट्री एठू हमर यूएसएसआर रो डिसइंटीग्रेट हैला तो लॉट ऑफ हमर मेनी कंट्रीज दे जॉइन द नाटो ग्रुप तो डेफिनेटली हमर कोन हो ना जो ईस्टर्न रीजन रे तो नाटोर जो दबदबा रहिबा डेफिनेटली एटा रशिया पे गोटे थ्रेट एंड ऑलवेज रशिया एंड यूएस दे आर actually seen as their natural enemy to each other तो से so present जो day war trace its roots below the 3 point first is attempt by the Ukraine to end the cultural ties with built with Russia then protect the autonomous existence of Ukraine then growing influence of the NATO in the Soviet region okay with Ukraine as a major remaining territory between directly Russia and NATO face तो डेफिनेटली जदि यूक्रेन जॉइन करुच्ची नाटो रे तो इट विल बी ए स्ट्रैटेजिक एंड आमर मिलिटरी थ्रेट टू रशियन रीजन तो से आमर यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओके तो तार जदि आम देखा तो रीजन फॉर रशियाज इंटरेस्ट इन यूक्रेन कौन पाई ओके तो आर मेन ये कहूँ जहाँ भी तुम कर दियो यूक्रेन शुड नॉट जॉइन द नाटो एज ए मेंबर so NATO should return to 1997 जो पोजीशन
that is position before signing NATO Russia founding act. No new infrastructure building to station troops from NATO in this region. So marginalization of the historical cultural ties and the people of Russian identity must stop. Reason for Russia's interest in the Ukraine: Russia is not happy with the effort of US and European Union to induct Ukraine into the US-led military alliance to NATO, keep it out of Russian control. Okay, so Ukraine act as a crucial buffer between Russia and NATO. The historical ties: Russia has a deep cultural, economic and political bond with यूक्रेन. तमर जो यूक्रेन रो जो ईस्टर्न पार्टा एथि जो माने लोक रहउछन्ती से माने प्रो रशिया आ वेस्टर्न पार्ट दे आर प्रो यूरोपियन को हमर सपोर्ट करूछन्ती. तो डेफिनेटली हमर जेंति कि एमाने कोन करथिले ना जते बेले हमें कहउथिले जे हमर जे हमर प्रेसिडेंट सेते बेले थिले तो हमर $15 बिलियन रो एमाने बेल आउट पैकेज हमर रशियन रो आनिथिले आ कुहा जाउथिले कि यूक्रेन को टोटल एमाने रशिया को माने देई देला भलिया. तो तांकर जेतले इलेक्शन रे से माने हारी गला पारे जे नुवा प्रेसिडेंट हेले तो सी प्रो हमर यूएस थिले. ओके, तो डेफिनेटली जेतले हमर नाटो ग्रुप आड़ को से माने इन्वॉल्व हेले तो एमान को सेटा पसंद लागिबनी. ओके, तो रशियन डायस्पोरा एमंग द रशियन टॉप concern is the welfare of approximately 8 million ethnic Russian living in Ukraine. The superpower image: so losing a permanent hold in Ukraine, letting it to fall in the western orbit, so was seen by many as a major blow to Russia international prestige. तो आमर जो आम कहे पावर जो बैलेंस ऑफ पावर तो सेटा भी आमर गोटे. तो ये जो आम कहते मिनिस्क एग्रीमेंट आमर होता 2014 रे. तो ये कौन होता ना से कहुए जे 12 पॉइंट सीजफायर एग्रीमेंट साइन बिटवीन रशिया यूक्रेन एंड यूक्रेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन एंड प्रो रशिया लीडर फ्रॉम टोनेक्स एंड at Belarus रे हमर एटा हेतला. सो मिनिस्क एग्रीमेंट रे हमर आल्सो नोन एज नॉर्मन 4. इट इज साइन बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन एंड रशिया आफ्टर फेल्यूर ऑफ द मिनिस्क एग्रीमेंट 1. ओके, तो से जो हमर एग्रीमेंट ऑलरेडी हेतला तो से गुडा को हमर कोन हला ना इमाने कोन करले ना वार्षा को डिसॉल्व करले. नाटो डिसॉल्व हलानी आ से माने कहिथिले जे आउ से माने एक्सपेंशन करिवेनी किंतु सेटा से माने प्रॉमिस न रखी कि हमर मोस्ट ऑफ द कंट्री जोडा कि हमर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हला पर नाटो रे मिसेले. तो इट इज ऑलवेज माने देखले जे अंक टेरिटरी भितर अननेसेसरी माने इन्वॉल्वमेंट होउछन्ती. ओके ओके, तो ये केस रे तो यहाँ तुम गोटे मेन पॉइंट तुम गोटे मन रखी थी जे हमर नाटोर इन्वॉल्वमेंट यहाँ हूँ वन ऑफ द मेन रीजन बोले तुम ये पॉइंट रे कहि परिबो. ओके, सो एनी अदर पॉइंट आप हमर आउ किछि पॉइंट्स तुम जदि कहबो. ओके, जहाँ भी हमें डिस्कशन कले जो गुड़ाक. ओके, ता बाद जो गुड़ाक तुम हिस्ट्री को लेकिन टिके कहबो कि कहीं हमर जे ये जो वार हवा पछरे कौन रियल क्लॉज एक्चुअली थिला. तो ये केवल जे माने अननेसेसरी रशिया एमती अटैक करिकी एथि ता पछरे बहुत रीजन भी अच्छी. तांकर एग्रीमेंट हेतला ऑलरेडी कि से माने जो ईस्टर्न पार्ट रे एते इन्फ्लुएंस करिवेनी कि हमरो नाटो ग्रुप रे मिसेबेनी आ तमे तमरो डिसॉल्व कर दियो वर्ष को आमे भी हमरो नाटो को डिसॉल्व करबू. किंतु एमाने डिसॉल्व कले नाटो ग्रुप डिसॉल्व हेलानी आ एमाने इनडायरेक्टली हमरो ईस्टर्न पार्ट रे स्प्रेड करिया को एक्सपेंशन करिया को ट्राई कले. ओके, तापरे टिके डिटेल पढ़िबो. मु केतरा वीडियो भी ग्रुप रे छाड़ीबी सो दैट कि तापरे डिटेल टिके हमरा पढ़िबो. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आमे करबा जो फ्री बीज ऊपर हमरा एबे बहुत न्यूज रे चली छी. आ इवन इफ हमरा सुप्रीम कोर्ट रे भी आप रे डिस्कशन हेतला. 15th फाइनेंस कमीशन भी हमरा कोन ना आकु नै कि किछि पॉइंट्स देथिला. तो फ्री बीज हमरा केते दूर सटीक और हाउ मच एटा हमरा रिलेवेंट रहिबा दरकार कि रहिबा दरकार नै आ केते जोडा कि हमर पॉलिटिकल रैलीज किमा पॉलिटिकल हमर जो इलेक्शन को एटा जो इन्फ्लुएंस करूची. तो तापरे जो गोटे डिस्कशन और डिबेट कंटिन्यूअसली चली. तो तापरे भी मे भी हमर कोन ना क्वेश्चन तुमको पचरा जाय परिबो. तो फ्री बीज ऊपर हमर कोन कोन पॉइंट्स रहइबो. हाँ गुरु को
Sir, the issue of privilege recently rise, but it was very long history. Just after independence, every regional governments, regional political parties securing their votes, they apply this privilege. But recently, what happened that the environment, the CJI issued a serious threat about the irrational privilege that recently announced by Aam Aadmi Party government under the mission Punjab that every woman household will be distributed with 1,000 rupees per month in their election manifesto. And according to that, Aam Aadmi Party also elected in Punjab. But the issue is how this can be done because Punjab is now all-time high among all the states, that is debt of 53.3 percentage of its GDP as liabilities. So the problem is here, but many state governments and also national governments, central government applying this privilege due to different causes, just like eradication of poverty, unemployment, and lack of political discourse, and also due to the political immaturity. But the incentive gives to the companies, just like public incentives, and due to that our the tax collection is also very much disrupt. And this privilege, according to me, benefit also gives some problems, just like it should be distributed due to secure our articles 39 clause 6 and also article 47 and also article 38 under the DPSP section of the Constitution of India. Also it eradicate the societal inequalities. Also it help to reach a strategic poor to a middle class society. Also it reduce the discontent reduction, just like different schemes of Government of India, MG Narega, which is very much important, which is lifeline, which become the lifeline for the poor people during the pandemics. Recently we seen also Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana and also PDS scheme for the NFSA 2013. But the problem is in the strength of the fiscal deficit. By not surveying the fiscal deficit strength of a state, they apply the privilege erratically, irrationally, and it will declining the poverty, but fiscal stress was very much high. Discrimination against the honest taxpayer is also high, and it also wastage of resources for the allocation of this privilege. Okay, sir. Okay. Okay, Pradyumna, any other point? Sir, it is against democracy because voters are low for voting and the labor productivity is low because they are getting freebies and fiscal stress on the government. And in support also, it like emergency like situation, COVID-19 freebie is good. And for creating demand in the market, we also freebies also helps. We give reach as incentive, but while we are giving for people food grains like other necessary thing, we call it freebies. That is not good. It brings social stability because marginal sections should get some freebies. Otherwise, they will bring revolution like situation. And inequality, it is reducing inequality in the society. And we can say solution like internal party democracy. Election Commission should look at the freebies which is unnecessary. We can create job creation for that. We should check public expenditure outcome. What is the outcome? Pradyumna, जो हमारा +2 पिलाମାନଙ୍କୁ दिया जाउची लैपटॉप दिया जाउची, whether it is a freebies or it is necessary? I think it is not necessary. Okay.
Sir, this is the digital era. It is most necessary. But here, I think government should take a measures to identify who are the actual beneficiaries. Accordingly, they should distribute. Thank you, sir. Okay. Yeah, Amit कौन कहबो? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଫ୍ରି ବିଜ୍ କଲ୍ଟଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେତେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହୁଛେ ତ ଲାପଟପଟା ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ବିପିଏଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ସେକ୍ସନର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ କେବେ 50,000 ଦେଇ ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ କିଣି ପାରିବେନି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଲିମିଟ୍ 8 ଲକ୍ଷ ଏବଭ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ନ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଲେବୁଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ସେଟା କେମିତି ହବ? ତ ସେଠି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆଇଏସ୍ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଆଇଏସ୍ ହିଁ ହଉଥିବ, ନର୍ମାଲ ପିଲା କେମିତି ଆସି କମ୍ପିଟ୍ କରିବ? वेरी गुड ओके से पॉइंट हम चाहूँगी ओके यस अच्छा हमारा जो कॉर्पोरेट फ्री बीज दिया होची सो हमें लोन को वेव करा होची तो एटा जो गवर्नमेंट रो जाउची तो एटा भी गोटे टाइप रो फ्री बीज तो सर फ्री बीज किए नौनी सर फ्री बीज समस्त नौजंती सर एटा ट्रिकल डाउन इफेक्ट पकेबो सर एमएलए एमपी थोड़े हेले से माने होल लाइफ पेंशन पाउचंती तो सेटा भी फास्ट बंद करिया दरकार थोड़े मतलब होल लाइफ टाइम कहीं से बेनिफिट रहबे ताकर एयर टिकट डिस्काउंट सब थ्री डिस्काउंट तो जब तक नॉर्मल लोक को गुडे फ्री बीज दिया से तर क्वेश्चन आसुजी किंतु जो माने ऊपर सेक्शन रहिले ओके फास्ट कथा हो जे फ्री बीज को मान को दिया जेबा दरकार आ फ्री बीज रहिबा दरकार ना नाही सर जेमते हम दिल्ली गवर्नमेंट जो ऑल वुमेन मान को कला जो फ्री बस सर्विस सेटा करिया नथला जो माने अनएम्प्लॉयमेंट जे माने डेली लेबर से मान को हमर फ्री बीज ता दबा दरकार कि जो माने जने गवर्नमेंट सर्विस रे अछि ताकू किछि दरकार नाही सेटा ना तो अपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी सेटा होछि मेन कॉज किंतु सेटा हो नाही जेहेतु वोट बैंक पॉलिटिक्स तो हम ऑल सेक्शन को टारगेट करिवु तो सेटा होछि प्रॉब्लम जदि आमे जदि किछि हमर टैक्स पैसा रो सैक्रिफाई हेइ कि जदि माने सोसाइटी रो भलो पई होछि हमर किछि कहबा नै किंतु सेटा प्रॉपर लोक पाखर पहुंचिया दरकार सेटा होछि मेन कॉज कई किछि कंप्लेन भी करिवेनी ओके सर जो कॉर्पोरेट मान को दिया होछि सब्सिडीज तो सेटा किछि ट्रिकल डाउन इफेक्ट माध्यम रे गरीब लोक मान पई भी किछि बेनिफिट आनिबो तो सेटा टीबीज रे हेले किछि क्षति नै सपोज सेटा रहिबे जण को हमरा 30,000 करोड़ रो कि 10,000 करोड़ रो हमारा लोन वेव अप हे गला तो एटा हमारा फ्री बीज रे आसुछि ना आसुनी सर जदी से अन्य डेवलपमेंट रे से गुडा को यूज करि परिबे ताको सब्सिडी टा को डाइवर्ट करि कि सोसाइटी रो डेवलपमेंट पई किछि करूचंदी जो द्वारा कि पुअर माने उपकृत होचंदी ताले सेटा भलो माने किछि एडवांटेज रहउछि से फ्री बीज रो जदी से करू नांती ताले माने फ्री बीज टा दबा कथा नहे तांगु सो ठीक अछि तो फास्ट को सर आउ गुड एग्जांपल लेबे जो हमर कोविड वैक्सीनेशन टाइम रे जो हला वैक्सीनेशन फॉर ऑल फ्री करा हला सेटा करिया नथिला जो माने बीपीएल कैटेगरी जो माने निजे अफोर्ड करि परिबेनी सेई मान को फ्री वैक्सीनेशन टा दबार थिला तो जे अफोर्ड करि परिबो तो सिने जे किनि थांदा तो दरकार पूरा कंप्लीट बैन न ताको माने बैलेंस करि दबार अछि ओके तो प्रॉब्लम तो फ्री बीज ता कोन पे दरकार फ्री बीज कोन पे दिया होचे आ वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट तो फास्ट सेटा को डिसाइड करबो तो कारण बहुत गुडे लोक हमर बिलो प्रॉपर्टी लाइन तले अछन तो जदी हमर जनकर एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट करिवार अछि किबा हेल्थ को अपलिफ्टमेंट करिवार अछि सपोज हमें कहबा जे हमर जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना तो सेथरे भी हमर दोचे करना सपोज 5 लाख रुपीस हमर लाइफ इंश्योरेंस दिया जाउची तो एटा हमें कहू जे एटा होची कोन ना ओडे पॉलिसी आसी छि जोडा कि हमरा वेदर इट इज फ्री बीज और एटा फ्री बीज की फ्री बीज नहे तो एटा हम सेंट्रल गवर्नमेंट दोउची तो जोडा नेसेसरी हेडा निहाती रहिबा दरकार एंड जेमती डिस्कशन हमें करूथले कि आगो प्रथमे आइडेंटिफाइड करबा दरकार हु आर एक्चुअली रियली डिजर्व दिस माने फ्री बीज तो जदि दे आर से मानकर जदि कंडीशन इंप्रूवमेंट करिवार अछि से मानकर कोनो माने हेल्थ कंडीशन की एजुकेशन ए सब सिस्टम जदि डेवलपमेंट करिवार अछि तो डेफिनेटली हमरो फ्री बीज रहिबा दरकार ओके किंतु इलेक्शन टाइम रे जो दिया जाउछि फ्री इलेक्ट्रिसिटी हला फ्री हमरो लोन वेव कर दिया जाउछि तो हमरो लैपटॉप सपोज हमरो दिया जाउछि लैपटॉप दिया जिवो निहाती दरकार किंतु जणे हमरो ए जो डिजिटल हमें कहू जे एज रे डेफिनेटली इफ ए पुअर पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए लैपटॉप इन हिज लाइफ टाइम फॉर दो स्टूडेंट इफ इज
definitely scoring some 80% whatever the cutoff line they have decided. So if some a poor person or a BPL girl or boy securing that mark, then definitely we can give it the laptop to him. And it is, if it is universally giving to everyone, whether his father is earning 20 lakhs and one girl or boy father is earning 20,000, everyone if it is getting, then it is waste of money. Those who can buy, for them it is like a freebie and it should be stopped, and those who, and definitely it should be given to the poor people so that they can also there should not have a digital divide between have and have not. तो definitely सेमानकु हमर लैपटॉप दवा दरकार ओके किंतु हमर जेमति कि हमें कहू देउछे फ्री राइड्स हमर जेमति कहउतले कि बस सर्विस हैला कि इलेक्ट्रिसिटी पूरा फ्री तो इट इज हमर कोन ना पीपल आर एक्चुअली we are it is directly going from the exchequer fund, it is going, so people are, we are paying the tax, so it should be actually used for some infrastructure development which can generate some employment or other part of the economy re ame investment kari pari thande jodi eguda ka amara only to get the to gain the voter manakara जो ट्रस्ट आ भोट को जितिया पे हमें यूज करछे, देन इट इज हमारा प्रॉब्लम. तो जदि फ्री बीज एक्चुअली रहिबा दरकार टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द पीपल, टू अपलिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड, मे बी हमर कोन रहबा ना एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एमान को पाई जोठी निहाती दरकार. जेमति कि हमर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, एटा इट इज ओनली फॉर को माने पाई जो माने दे कैन नॉट सपोज सम मेडिकल रे से माने दे कैन नॉट use spend a huge amount, otherwise they can otherwise they will slip back to the amara below poverty line. तो सेति भाई हमरो सेही कंडीशन इफ यू गिव देन इट विल बी माने गोटे हमें कहबा जे गुड थिंग्स, किंतु जदी अननेसेसरी तमे जे अफोर्ड करि परिबो ताकू भी हमर जदी 10 लाख दिया हबो आउ जो माने कि तो सेही केस रे इट इज नॉट एक्चुअली कोन होची ना बेनिफिट टू द हमरो सोसाइटी. ओके सर फ्रीबीज डिसाइड करबा आगु सबले नीड बेस्ड आ वायबल टू बजट कि नै देखिबा बहुत जरूरी. तनो ए जो हां freebies is a relative term. It can be different to different state and it can be differ to region to region. Like in Rajasthan, providing drinking water is a, you can say, an incentive. Like in Kerala, giving if the state government give them incentive to boost their economy, to boost the industrial sector. So, sir, it is different to different reasons. And so there are many, positive impact, and there are many negative impacts of freebies. And there is a thin line between welfare schemes and freebies. So, sir, if the government declare any public policy that intervenes and that does not support in a long term and it in productivity and production, that can be termed as a freebies. Okay, yes. किंतु माने हाँ जोड़ा कहला तमे कि गोटे फ्रीबीज एंड पॉलिसी, सो भितर एटा होचे हमरा कोन गोटे थिन लाइन कोडा को हमरा कहबा जे गोटे फॉर वेलफेयर स्टेट पाई दिस पॉलिसी इज रिक्वायर्ड एंड फॉर और इट इज ए फ्रीबीज, तो सेटा डिसाइड करबा इज वेरी माने ता डेफिनेशन ऑफ द फ्रीबीज इज इटसेल्फ ए डिफिकल्ट टास्क कि कोडा फ्रीबीज एंड कोडा होचे हमरा गोटे वेलफेयर स्टेट पाई हमें एटा पॉलिसीटा इम्प्लीमेंटेशन करछन. जेमति कि हमें कहूजे तमिलनाडु केस रे जणे पॉलिटिकल पार्टी तो हमरा ग्राइंडर देला को आउ जणे कहूछ मु कलर टीवी देबी. ओके, सो टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स if you are giving something out of the tax or the public money, then definitely which is not necessary, so definitely it out a freebies. Kintu jodi tame save So one more example I want to add. Sir, in Tamil Nadu, the 1956 government, they started a scheme, that midday meal program. Yes. That was inculcated in the national scheme also. Yeah. Sir, even though they have, due to which the family started to send their children
and due to which many students were there. There was a scene that students were enrolled. There was high, and even though we can see now their enrollment is higher than the national average, it is double. And sir, there is in Andhra Pradesh, sir, they were giving, the government gave 2 kg rupees rice, they were giving, sir. So this was also seen in our central scheme, National Food Security Program. And there, sir, in our also state, we can see that Kalia program, Kalia Yojana. Sir, this is also seen that government has taken this program like in the name of Kisan Samman Nidhi Yojana. So these are the positive intake. And there are some negative intakes are there, like revenue is decreasing, and sir, it is a burden for the financial health of the state. Yes, sir. Okay, so ठीक अच्छे. So let's see एथिरे कौन कौन आमे हाँ सौम्य कौन किसी points कहबो और let me share the screen. Yes, sir, I'd like to add one more point. I think if we will be able to have a much better resources, then it will be helpful to helpful for the social sector expenditure. We need to have a good tax framework. Like we have to widen the tax base. As we can see, there in India there are less than 6% of people who pay income tax in our country. So there has been a stagnant income tax base for years in India. And another thing we can do is many tax instruments in India are not being used, like the wealth tax, the estate tax, or inheritance tax. And compared to other countries, the property tax of India is very low. It is around 0.2% of GDP. So there is a great scope of raising the revenue, which might help us for social sector expenditure. Okay. Sir, one more point I want to add. Sir, sir, this welfare, social welfare policies should be target oriented, so that this will lead to the upliftment of a particular society, because they will be uplifted by this. Yes. Okay. तो फास्ट हमें फ्रीविज कौन कहबो कहीं केटा एबे न्यूज रे अछि इवन इफ हमर सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमर सुप्रीम कोर्ट रे भी ए पॉइंट्स उठिछि एंड 15th फाइनेंस कमिशन चेयरमैन जे थिले से भी हमर ए क्वेश्चन रेज करिसंती. ओके, सो रिसेंटली हमर 15th फाइनेंस कमिशन चेयरपर्सन रेज द कंसर्न ओवर ग्रोइंग political election freebies with the need to contemplate adopting the concept of subnational bankruptcy. तो ये आमर कौन फ्रीबीज आमर को गुड़ाक आमर इलेक्शन फ्रीबीज कौन को केस रे दिया जाउछि इलेक्शन फ्रीबीज. तो डेफिनेटली इलेक्शन फ्रीबीज आर ऑफरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ irrational freebies from the political party as a part of electoral promise. जमती कि आम कहले पंजाब रो प्रॉमिस करथिले कि हमर दिल्ली रे जमती कि आम कहले कि बस रे टोटल बस माने तमर पूरा भड़ा फ्री कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी हला कि फ्री वाटर कि फ्री राइड्स हला लोन वेवर होची कि अलाउंस लैपटॉप. तो ये सब गुड़ाक आमर जो इलेक्शन टाइम रे जदि दिजी माने फ्रीली आमर डिस्ट्रीब्यूट करा होची किंबा से मानकर इलेक्टोरल मैनिफेस्टो रे प्रॉमिस करा जाउची डेफिनेटली टू इन्फ्लुएंस द वोटर. तो एडा आमर निहाती आमर कोन करबा दरकार ना रिव्यू करबा निहाती दरकार. सो सम ऑफ दिस फ्रीबीज जोड़ा कि निहाती रहिबा दरकार हेल्प देम टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द पीपल एंड अपलिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड. जमती कि आम एग्जांपल दउतले कि एजुकेशन रो जदि आम कहबा जे स्कूल एनरोलमेंट रो रेशियो को इंक्रीज करिया पे डेफिनेटली जो मिड डे मील स्कीम आसिला तो डेफिनेटली पीपल हु कैन नॉट एक्चुअली प्रीवियसली जॉइन द स्कूल बिकॉज दे द फैमिली हमर कौन ना से इनकम रे लगौले कारण से इनकम कले ही सपोज किसी इनकम आसिले खाइबा मिलूला. तो एबे एमान को जदि गवर्नमेंट तरफ रु किसी खाइबा दिया जाउछि तो डेफिनेटली पीपल विल कम. ओके, जहाँ फल कि आमर कौन हम ना लिटरेसी रेट आमर हाई हम. ओके, तो एजुकेशन केस रे गला. सिमिलरली आमर हेल्थ केस रे जतला आम कहले आमर जेंति बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हला तो जो थी कि आमर कौन ना हेल्थ इंश्योरेंस दि जाउछि टू ट्रीट द जदि तुम कौन
डिजीज रे पढ़ुछ सेकेंडरी कि टर्शियरी रे तो गोटे पर्टिकुलर आम हॉस्पिटल रे जो दिया जाउछि कोन ना अप टू 7 लाख पर्यंत तुमको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराउछ ट्रीटमेंट कॉस्ट दिया जाइछि गोटे फैमिली पूरा होल फैमिली आम कवर होउछंती तो सिमिलरली आमर सपोज जो जो माने मार्जिनल फार्मर रहिले तो से भी आमर जमती कि कालिया योजना है कि प्रधानमंत्री किसान योजना रहा तो से जो आमर 6000 आम सेंटर कि स्टेट 10,000 दिया दिस इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपुल और डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल सो दिस इज वन साइड जोटा को आम कहे यहाँ कौन ना तुम कह पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फॉर ए वेलफेयर स्टेट किंतु फ्री वीज मैंने अननेसेसरी इफ यू आर गिविंग द मनी टू इन्फ्लुएंस द वोटर तो दैट इज आमर आसूँ आमर कहते ना फ्री वीज रे ओके तो समटाइम से कौन हो कोठी हमें जो डिवाइड कोठी हमें डेफिनेशन केमती कहवा जे दिस इज वेदर इट इज ए फ्री वीज और इट इज फॉर वेलफेयर स्टेट पाई पॉलिसी सो देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन दिस एंड एवरी पॉलिसी और एवरी whatever the distribution offering giving to the public it should be only target oriented not should be universal target oriented means only those people who really deserve to get this like the benefit it should be given to them so socio-economic parameters should be there so based on that parameter only we have to validate and prepare the list okay these are the people who really deserve this this health insurance or this farmer benefit income or this education suppose laptop so that should be only target oriented so जदि आम फ्री वीज दबा ताले प्रॉब्लम कौन हम ना डेफिनेटली आमर जदि एक्सचेकर रु ह्यूज अमाउंट आम स्पेंड करबा तो बैंकरप्सी आड़ को जीवा ओके तो आमर डिस्टॉर्टेड एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज रहिबो इंफ्रास्ट्रक्चर सब ऑप्टिमल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस ओके इकोनॉमिक इश्यू गुड़ाक लॉट ऑफ इकोनॉमिक इश्यू आमर आसो ओके तो डेफिनेटली ये फ्री वीज जो गुड़ाक रहा तो इट शुड बी डेफिनेटली ह्यूज बर्डन टू द स्टेट एक्सचेकर हम जो देख तो इश्यूज विथ फ्री वीज तो नेगेटिव इंपैक्ट कौन रहा ह्यूज ड्रेन on the state exchequer affecting the fiscal balance and microeconomic stability of the country हमारा तेलंगाना का केस रे कहवा तेलंगाना फॉर एग्जांपल तुम तेलंगाना हैज कमिटेड 35% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड ऑलमोस्ट 63% ऑफ द स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू टू फाइनेंस द पॉपुलिस्ट स्कीम तुम भाव जदि तुम 60% जी तुम 63% जी तुम टैक्स आसूची तुम जदि 63% आमर यूज कर ओनली फॉर द पॉपुलिस्ट स्कीम बिकॉज व्हिच आर कंसंट्रेटेड सेंटर अराउंड आवर फ्री वीज ओके तो ये जो पर्टिकुलर थिंग्स गुड़ाक रोचे तो केवल कौन ना समटाइम्स आमर माने वेलफेयर स्टेट ना दे वांट टू एक्चुअली वांट टू स्टे इन द पावर पाई लोक मानकर वोट पाई भी हमरा गुड़ाक दिया पॉलिटिकल इश्यू सो इट इज गोज अगेंस्ट आर्टिकल 14 डिस्टॉर्टिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड एमंग द पॉलिटिकल पार्टीज तापर सोशियो साइकोलॉजिकल इश्यू रोची ओके सो डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक डिसीजन लैक ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस leading to various socio-psychological issues such as reduced effort in laziness, threat and social cohesion by creating artificial divide between have and have-nots. Okay, environment upare amara kon related issue am dekhiya free which promote unsustainable practice by pushing the government and the people away from environmental sustainable practice. Example amara फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो समस्त जदि आम फ्री इलेक्ट्रिसिटी दबा तो इट इज डेफिनेटली इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट ना नहीं तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर द फार्मर ओके तो डोमेस्टिक हाउस होल्ड टू इंस्टॉल सोलार पैनल तो आम जो कहूचे आम कहीं जदि इलेक्ट्रिसिटी आमको फ्री रे मिलूची आम कहीं जाकि सोलार पैनल आमर इंस्टॉल करवा अଯଥା आम इन्वेस्टमेंट कहीं करवा जदि समस्ते फ्री इलेक्ट्रिसिटी जालिबा सोलार पैनल करवा तो डेफिनेटली जो आमर जो टार्गेट अच्छी रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 सुधा आम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2022 सुधा 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी आम टार्गेट अच्छी इट कैन नॉट बी अच्छी कहीं आम जा रिन्यूएबल एनर्जी सोलार को तो समस्त को आमको कौन ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलूँ तो यहाँ भी आम इम्पैक्ट पकेब तो आमर आउ कौन ना तुम जो देख जो वे फॉरवर्ड आमर इलेक्शन कमिशन डेफिनेटली यहाँ को आमर कौन ना गाइडलाइन प्रॉपर गाइडलाइन इश्यू करने कथा वेरीफाइड करने कथा तो डिफरेंस बिटवीन फ्री वीज विथ प्रायर टू डीपीएसपी
बेस्ड ऑन मेरिट गुड्स सच एज पीडीएस सिस्टम एजुकेशन हेल्थ तो जो गुड़ाक आम रियली रिक्वायर्ड सपोज एजुकेशन हेल्थ दरकार तो सही केस रे तुम कौन कर ना किसी पॉलिसी नहीं कि आसीपर ओके नीड बेस फ्री विज विथ ट्रांसपेरेंसी तो जो मान को आम कौन करवा ना टार्गेट ओरिएंटेड दिया दबा दरकार रादर देन आम यूनिवर्सल करवा दरकार ओके तापर आमर आछि मोर इनक्लूसिव एंड हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट so to meet people's aspiration of job better living standard lesser inequality जे आमे कहू जे जेमति कि हमर प्राइम मिनिस्टर कहउछंदी जे एंटाइटलमेंट टू एम्पावरमेंट ओके रादर देन आमे माने सब जिनस फ्री दबा अपेक्षा लेट देम एम्पावरमेंट स्किल डेवलपमेंट करबा तो वी शुड माने गो इन दैट डायरेक्शन जोठी कि से माने निजे जाई कि कौन करि परिबे ना सपोज आमे काहा को वोकेशनल की स्किल ट्रेनिंग दोचे आफ्टर दैट से माने कौन करि परिबे ना निजे छोटो मोटो बिजनेस करि परिबे तो तमे सपोज काहा को लोन दोच तो एटा गोटे दियो से स्मॉल बिजनेस करि परिबो तो हमर कोन ना वी शुड गो बियॉन्ड एंटाइटलमेंट टू एम्पावरमेंट आड़क आम जा सोसाइटी रे पीपल मान को आम एम्पावरमेंट करबा निहाती दरकार ओके तो एमती किसी पॉलिसी नहीं कि आसबा एंड इम्प्लीमेंटेशन करबा इट शुड बी बेनिफिट फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द वेलफेयर स्टेट को आड़क आम जा कथा कहूँ तो सहीटा डिरेक्शन आमर रही क्वेश्चन जब पचरा हम जे आमर जमती कि लोन वेव कराई कॉर्पोरेट हो कि इलेक्शन टाइम रे फार्मर मान वेदर इट शुड बी माने वायबल फॉर आमर गोटे गोटे डेवलप कंट्री पाई कि आमर गोटे वेलफेयर स्टेट पाई एटा वायबल नो ओके सो बुझिपार किसी आइडिया आसला वेल माने फ्री बीज उपरे जदि किसी आमर पड़ो कारण यहाँ एत इलेक्शन फिलेक्शन हो न्यूज रे रोचे आमर फाइनेंस कमिशन भी रिकमेंडेशन देछि सुप्रीम कोर्ट भी तो ये जो टॉपिक गुड़ाक हाईली आमर इम्पोर्टेंट रहिबो ओके ठीक अच्छे हाँ मुदेदेवी सब गुड़ाक पीडीएफ आम कौन करी गोटे करके देदेवी ओके तो आउ गोटे टॉपिक मोर करिवार थिला ओके गोटे मिनिट हाँ आउ गोटे आमर जे इंडिया जो क्लाइमेट टार्गेट तो जेहेतु आम एते पूरा टोटाल वर्ल्ड एवं आमर कप 26 होता जो ग्लासगो रे से भी आमर इंडिया पंचामृत जो स्कीम नहीं कि आसीथिला तो इंडिया जो क्लाइमेट टार्गेट उपरे सपोज पचारा कि एबे ग्लोबल वार्मिंग चली व्हाट शुड बी इंडिया एबे जो टार्गेट रखी कि इंडिया रो कौन आमर क्लाइमेट चेंज पाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज रही और कौन कौन स्टेप्स नौची तो से डायरेक्शन में किछिटा पॉइंट आम डिस्कसन करबा तापर क्लोज अप करबा बट डिटेल रे मु तुमको डॉक्यूमेंट सह नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कसन करबा सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस रफली कि आमर जो इंडिया रो क्लाइमेट जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को लेकिन कौन कौन इंडिया स्टेप्स नहीं तो तापर आमर सिंपल पचरा हम गोटे सिंपल क्वेश्चन कि आमर गवर्नमेंट कौन ग्रीन इकोनॉमी कथा आम कहूचे कि क्लाइमेट चेंज कि आम कहूचे गवर्नमेंट एंड मोर टुवर्ड्स आमर ट्राए कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आड़ तो से डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स कौन कौन अच्छी ओके तो कौन कौन आमर पॉइंट्स रहिबो जी कह पूरा बुलेट पॉइंट रे कह पूरा शॉर्ट और बुलेट पॉइंट रे कह ओके माने मच मोर आमर ये नहीं तो यही स्टेप्स नहीं तो बुलेट पॉइंट रे कह कौन है जी Sir, in energy sector, Ujjwala is one initiative, and International Solar Alliance, that is to promote renewable energy resources, and BS6 fuel, that is biofuel policy, and the afforestation program, that is to increase the carbon sink, and the hybrid, the FAM, faster adoption of manufacturing electrical vehicles. That's FAM 1 and 2, that is one initiative. Besides that, the target of different renewable energy like from wind energy, wind energy, thermal and tidal, okay. That is to enhance our renewable energy capacity and to decrease the non-fossil fuel energy capacity. Okay. That is to be for 500 gigawatt by 2030. Okay. Sir, ethanol policy. Very good, Tanuja. Okay. Go to the point कही चलो समझते. Okay. Yes, Sirsad. Sir.
हाँ इर्षाद तापर नीलाद इर्षाद Sir, fossil fuel energy capacity at 500 gigawatt by 2030. Okay. 50% of energy requirement from renewable sources. Okay. Total carbon emission will be reduced by 1 billion ton from 2030. Okay. Carbon economy impact of carbon will be reduced to 45% only. Okay. ठीक ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଆମର ନିରାଜ sir. କୁହ सर टोटल 5टा माने पॉइंट कहले तार दुईटा ऑफिशियल करा है 3टा एजे पॉइंट ऑफिशियल डिक्लेयर कर जाइने सर फर्स्ट थिला कि सर जो हमर एमिशन थिला तार 45% रिड्यूसन कर दिए 30% जोटा जो एमिशन लेवल था 2005 रे और सेकंड पॉइंट को ऑफिशियल करा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टा 500 गीगावाट कर दिया 2030 तार इंप्लीमेंटेशन देखा होची वर्तमान माने जो सोलार अधिक माने एनर्जी विंड एनर्जी सब रिन्यूएबल एनर्जी के थर्ड पॉइंट थिला कि माने एटा ऑफिशियल करा हैनी कि फॉरेस्ट अमाउंट बढ़ा हबो तो नेशनल फॉरेस्ट सर्वे अनुसार ओडिशा जेंति 517 स्क्वायर किलोमीटर रो एरिया बढ़ी बट सेटा ऑफिशियल जे पन डिक्लेयर करा हैनी तो ए दुईटा को डिक्लेयर करा है आ हमरो केदार किछना इंपोर्टेंट पॉइंट थिला इथेनॉल ब्लेंडिंग करा हबो 20% टू 2023 टू स्टार्ट हे सर 2017 सुधा हमें नेट जीरो एमिशन हे सर ओके ठीक अछि Sir, one more thing is that to achieve the target of net zero by 2070. वेरी गुड ओके एटा हमरो जो पंचामृत आ हमरो जो कॉप 26 रे हमरो इंडिया प्रॉमिस करितला ओके ओके सो लेट मी स्टार्ट कि जहां जहां पॉइंट मु तुमको डिटेल ले कहि देब हां गुरु को Sir, I think I have to add India Denmark strategic green partnership recently signed. Okay. And another recent news is in IGT meeting of PM Modi and the Chancellor of Germany, it also declared to contribute around 10,000 US dollar to India for this green energy initiative. And recently in I2U2 meeting also USA committed to contribute around 230 or 330 million for the solar power panel in Gujarat. These three are. Sangeeta. Thank you, sir. Any other point, Sangeeta? Then Kajal. Sir, FAME scheme of e-mobility, manufacturing of electric vehicles. Okay. That is eco-friendly. Okay, very good. Kajal. Sir, blue hydrogen, green hydrogen mixture. Okay. ठीक अच्छे तो देख माने जति पॉइंट कहलो तो सबुडा को सम अप कले ना फास्ट हला जे हमरो सपोज हमरो टारगेट जो क्लाइमेट टारगेट पई कोन फास्ट हला जो कॉप 26 हेतला सेथरे पंचामृत तो सेथरे हमर कोन हतला ना आगरु तमे गुडे करा जायतिला जे 2005 जो एमिशन लेवल थिला तार 30 to 35% हमें कौन करिवा ना कार्बन एमिशन रिड्यूस करिवा बाय 2030 हमर जो वी आर नाउ मूविंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल एनर्जी रु हमें कौन ना थर्मल बेस पावर प्लांट रु हमें वी आर मूविंग टू द माने हमर रिन्यूएबल एनर्जी रु हमर सोर्स रु पावर टा हमें प्रोड्यूस करिया को ट्राई करूचे एंड वन ऑफ द एम्बिशियस टारगेट होची बाय 2030 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आमे कौन करिवा रिन्यूएबल एनर्जी रु पावर प्रोडक्शन करिवा सो 500 गीगावाट बाय 2030 देन 30 to 35% carbon emission by to 2030 on the 2005 level then net carbon neutrality by 2070 जे carbon neutrality हमरो 2070 जाय हमें करिवा नेक्स्ट हो जे हमरो ह्यूज हमरो प्लांटेशन टाइप जे गो ग्रीन इज हमरो कोन करा होची ना लॉट ऑफ हमरो स्कूल कॉलेज ए माने भितर अवेयरनेस क्रिएट करा जाउची टू फॉर प्लांटेशन ड्राइव पई ओके तापरे हमरो जेमति कि हमें कहले जे कार्बन एमिशन मेन कॉज होची जे वेहिकुलर एमिशन सो फॉर दैट वी आर यूजिंग BS6 इंजिन BS6 टाइप ऑफ फ्यूल और हमें कहि परिबा जे बायो इथेनॉल पॉलिसी 2018 आसी जो थरे कि बाय 2030 सुधा हमें 10% ब्लेंडिंग करिबा इथेनॉल ले पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग करिबा डीजल ओके एंड सिमिलर तमे कहि परिबा जे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैला त एगुडा हमरो तमे कहि परिबो एंड
तमर पर्टिकुलाली एबे जो आमर ए डायरेक्शन जदि कहबो वन ऑफ द एग्जांपल तमे कहि परबो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन इंडिया इज मच मोर टारगेट ओरिएंटेड रे आमर क्लाइमेट चेंज पई एक्शन नोची एंड वन ऑफ द फ्रंट लीडर इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएटिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वेयर इट इज सिचुएटेड इन इंडिया ओके तो एमती तुम एग्जांपल देकी तुम केतोडे पॉइंट कहि परिबा एंड फॉर आमे कहि परिबा जे एनर्जी सेविंग्स पई आमे कहि परिबा जे जेमति कि हमरो उजाला जो एलईडी आमे बल्ब यूज करछे रादर देन द ट्रेडिशनल जो बल्ब तो जो थ्री के हमरा एनर्जी कंजर्वेशन हेई परिबो ओके तो ये सब पॉइंट छुडा के तुम कहि परिबो ओके तो केतोडे पॉइंट हेलानी 10 12टा पॉइंट हेलानी तमरा आ पर तो गोटे एसे हां वेरी गुड वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड वन ग्रिड आमर यहाँ भी लॉन्च करा जाइए बाय इंटरनेशनल सोलर एलियंस लेड बाय इंडिया तो युवा तुम कहीपर ओके तो येस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन येस तो युवा कहीपर नॉर्डिक समिट क्लाइमेट चेंज तो आम पॉइंट्स गुड़ा रखिपर ठीक अच्छे तो आउ आमर दीटा आमर टॉपिक थिला कौन कौन आउ दीटा टॉपिक थिला हमें भूली गले गोटे है हाँ वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी गोटे थिला आउ एजुकेशन ऊपर आमर गोटे करियार थिला हमें नेक्स्ट क्लास रे मे बी टुमरो हमें करबा ओके तो मु टिके नेक्स्ट क्लास बेल को माने रैपिड वे रे हमें ट्राई करिया पई मे बी मोर मो पटू इन्फॉर्मेशन मु गुडा को जोडा को कहबी तापरे जोडा ऐड करिया कथा हमें इथरे ऐड कर दवा ओके तो सोडा का हमें करि परिबा ठीक अछि आउ कार किसी डाउट्स अच्छे कि पॉइंट्स अच्छे हाँ आ गोटे हूँ जे आमर ये जो आम जो प्रोग्रामटा आम करवा तो डेफिनेटली लॉट ऑफ माने आमर एथर एक्सपीरियंस प्रोफेसर रहिबे ओके प्लस आमर एथर जेहेतु आम आज जमती आम कहते कि गोपबंधु एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जॉइंट डायरेक्टर भी आसी ओके तो कथा भी होते कि डेफिनेटली सी हेल्प करेंगे आमको कहीकि जाइए ऑलरेडी यही मॉक इंटरव्यू हो कि आमर जो केमती आम इंटरव्यू रे कौन कौन स्टेप्स नबा तापरे डेफिनेटली आम ट्राए करवा तापरे मो भी मो तरफ केते जण प्रोफेसर वेरी मच इंटरेस्टेड से माने आसीबे जो माने सिविल सर्वेंट अच्छंती तो से मानकु भी बहुत जण इंटरेस्टेड अच्छंती आ से मानकु आम आनिक आसु तेणु आमर डेफिनेटली जो ता पूर्व आम कौन करवा इट इज तुम धरनी कि सबू शिखिज ये तो यहाँ गोटे टॉपिक जोटा कि जनरल आम डिस्कसन कले कि तुम टिके पढ़ कारण यही गुड़ा जो टॉपिक मुझे कहीं करुचे ना एगुड़ा न्यूज रे बर्तमान अच्छी जोटा कि एमती फ्री बीच है कि आमर जो इंडिया रो क्लाइमेट टार्गेट यहाँ आम न्यूज रे अच्छी कि आम जमीक रशिया यूक्रेन कले आज तो एजुकेशन रे कौन तापर हेल्थ रे कौन तो पर्टिकुलाली आउ ओडिशा रिलेटेड जहाँ भी करेन्ट अफेयर्स अच्छी तापाई मुझे गोटे डॉक्यूमेंट बनाऊँगी तो सहीटा को आम कौन करवा ना तुम तो जमीक कि पचारि दौरान कि पर्टिकुलाली कि यही स्कीम गुड़ाक कौन हो सपोज विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कि कालिया योजना कि बलराम योजना है कि 5T है लास्ट टाइम बहुत क्वेश्चन पचारे तो तापाई गोटे गोटे आमर खाली कौन ना फैक्ट रिलेटेड जो जिन गुड़ाक आम मन रखा कथा तो से करवा आ टोटाल लास्ट 1 ईयर भितर जहाँ भी ओडिशा रिलेटेड करेन्ट अफेयर्स आम कवर करवा ओके सो ओडिशा रिलेटेड करेन्ट अफेयर्स आम नेशनल आउ इंटरनेशनल इश्यू प्राय आम 100 टॉपिक कवर करवा जहाँ भी पचरा जीव से सो एवरीथिंग विल बी देयर से भीतर आम थी ओके एंड ता छड़ा आम हबी उपरे आउ पॉलिटिकल हमर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हम जोड़ाक जनरल क्वेश्चन तापाई केमिति कौन आंसर दवा कथा कौन करिया कथा विल डेफिनेटली डिस्कस करिया कथा कि मु सेम क्वेश्चन तुमको मे बी आफ्टर 5 क्लास पर पचारिबी कि वाई सिविल सर्विस तापाई आम गोटे डेभलप करबा गोटे गुड आंसर ओके तो यहाँ गोटे निहाती कारण सेटा ही तुम स्टार्टिंग पॉइंट आ सेटा ही तुम डिसाइडिंग फैक्टर आम रही ओके तो डेफिनेटली से डायरेक्शन भाव जिते चाहिए एग्जांपल देकी कनेक्ट करने को ट्राए कर कि रादर दैन गोटे स्वीपिंग स्टेटमेंट कहवा अपेक्षा गोटे आम एग्जांपल सहित ट्राए कर कनेक्ट करने ओके सर हॉबीटा हॉबी करवा हॉबी इच एंड एवरीथिंग जोड़ाक हॉबी करवा गोटे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी बनई क्वेश्चन से गुड़ाक बनाऊँगी तो से गुड़ाक गोटे कैप्सूल थ्रो रे आम टोटाल ग्रुप रे जो कौन करवा ना दे सो दैट जार जो हॉबी से रिलेटेड से आम प्रिपेयर कर सर प्लेइंग क्रिकेट वाचिंग क्रिकेट हे परियो कि हॉबी प्लेइंग क्रिकेट वाचिंग क्रिकेट हां कहि परिबो ओके बहुत पिला तो दियन दे हमर प्लेइंग क्रिकेट ओके
Okay, okay, ठीक अच्छी. Thank you everyone and have a great day.